Good morning, dear students. Today in this video, I am going to explain the back exercise of chapter number 5, and the name of the chapter is water. Okay, the back exercise is mentioned on the page number 45. So let's start with the first part, that is tick the correct option. Here again, one statement is given and there are three options, out of which we have to find out the correct one. So first is we use water for dash. हम वाटर का यूज़ किस लिए करते हैं? ऑप्शन है ड्रिंकिंग, वॉकिंग, राइटिंग. द आंसर विल बी ड्रिंकिंग. सो टिक हियर and you have to write the drinking in the given space. The second one is dash makes water dirty. Options are boiling, factory waste, filtration. मीन्स वो कौन सी एक्टिविटी है जिसके जिसके कारण जो वाटर है वो डर्टी होता है. डर्टी मीन्स गंदा. सो बॉइलिंग से क्या होता है? बॉइलिंग से तो वाटर प्योर होता है. इन द सेम वे फिल्ट्रेशन ऑल्सो हेल्प इन द purification of water. So the correct option is factory waste. Tick here and write this factory waste in the given space. The third one is dash is the purest source of water. Okay, वाटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म और प्योरेस्ट सोर्स कौन सा है? ऑप्शंस आर रिवर, वेल, रेन. Students, we have already read this कि rain water goes into the rivers and thereby also in the wells. So the purest source of water is rain. So tick here and write rain in the given space. The fourth one is dash is the source of groundwater. Options are ponds, well, river. Out of these three options, which is the source of groundwater? Groundwater means जो water हमारी जमीन के नीचे है. ठीक है. So the correct one is well. So tick here and write the well in the given place. Now moving towards the second part, that is the write true or false for the following statements. True means right, false means wrong. Here are some statements are given and we have to read this and tell whether these statements are right or wrong. हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. हमने वो बताना है कि वो स्टेटमेंट्स राइट हैं या रॉन्ग हैं. अगर वो स्टेटमेंट राइट होगी then we will write the true there, and if the statement is wrong then we will write false there. Okay, let's start with the first one, that is rain water collects in ponds and water. जो रेन वाटर होता है वो पॉन्ड्स और रिवर में कलेक्ट होता है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो वी हैव टू राइट हियर ट्रू, TRUE, ट्रू. द सेकेंड वन इज फिल्ट्रेशन मेक्स वाटर डर्टी. ओके, जब हम वाटर को फिल्टर करते हैं तो उससे वाटर डर्टी होता है, मीन्स गंदा होता है. इज दिस राइट? नो, दिस इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो वी हैव टू राइट हियर false, FALSE, false. The third one is we need water for drinking, cooking and bathing. हमें वाटर चाहिए किसके लिए? ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए एंड बाथिंग के लिए. इज दिस करेक्ट? यस, दिस स्टेटमेंट इज correct. So we have to write here true, TRUE, true. The fourth one is we should use shower to take a bath. हमें बाथ लेने के लिए शावर यूज़ करना चाहिए. नो, दिस इज़ रॉन्ग एंड वी हैव टू राइट हेयर फॉल्स, FALSE. Okay, we should take bath with the help of a bucket. The next one is waste from factories makes river water dirty. इट मीन्स जो फैक्ट्रीज में से वेस्ट निकलता है उसकी वजह से, उसके कारण जो रिवर वाटर होता है वो डर्टी हो जाता है. डर्टी मीन्स गंदा. यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट एंड वी हैव टू राइट हियर ट्रू, TRUE, ट्रू.
Now moving towards the next part, that is the part C, and put cross for the activities that make water dirty. In the given space, we have to put cross for those activities which are dirty, which makes water डर्टी. हमें उन एक्टिविटीज़ पे क्रॉस लगाना है जिसके कारण जो वाटर है वो डर्टी होता है. एंड द सेम वे टिक द एक्टिविटीज़ दैट मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग. और हमें उन एक्टिविटीज़ पे टिक लगाना है जिसकी हेल्प से जो वाटर है वो साफ प्योर हो जाता है. ठीक है, और जिसे हम उसके जिसका जूस हम ड्रिंकिंग में कर सकते हैं. सो हियर आर 4 पिक्चर्स आर गिवन in which different activities are shown. In the first picture, water is boiling. Okay, so boiling is a process by which we can pure the water. Okay, boiling is a process which is used to clean water. Water को clean करने के लिए boiling का use होता है. It means this activity make water fit for drinking. So we have to put a tick here. In the second picture, this person is throwing the garbage in the river. This is a bad habit and this is a bad activity, okay, which makes our water dirty. So we have to put a cross here. In the third picture, again a person is washing his cloth, okay, in river water, and again this water is not again this activity is not good for water, so we have to put a cross here. In the next picture also, a animal is taking bath inside a water body. That is again a wrong activity which makes water dirty, so that's why we have to put a cross here. Now moving towards the next page, that is part D. Read the clues and rearrange the letters to form the right word. Okay, bacha, here are some statements are given and also some clues, some hints are given from which we have to find the correct answer. Okay, so let's start with the first one, that is the it is the purest form of water. वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? हेयर पिक्चर इज ऑल्सो गिवन. सी, this is a picture of which thing, and hint is also given. We have to make a word with the help of these letter. So our answer is rain. We can find our answer with the help of these letter, like RAIN, rain. The second one is it helps in storing water. Okay, this thing helps in storing water. So we can find our answer with the help of these clues. Let's start. BUCKET. So our answer is bucket, and this is a picture of a bucket. Moving towards the third one, that is it helps in drawing out groundwater. Okay, with the help of this we can draw water out from the ग्राउंड. ओके, इसकी हेल्प से हम ग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं. ठीक है, सो लेट्स फाइंड द आंसर. हियर द लेटर्स आर गिवन दैट आर LLWE. सो वी कैन ए वर्ड विद दिस WELL, दैट इज ए well. So this is a picture of a well. I hope with this now you can understand the back exercise better. Now we will do the question answers. So here are the question answers of part E. Let's start with the first one, that is how can we make water fit for drinking. Okay, वो कौन सी एक्टिविटी है जिसके साथ हम वाटर को प्योर कर सकते हैं और वो जो वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल हो जाए. दैट आंसर इज बाय बॉइलिंग. ओके, बाय boiling. You can also write by boiling and filtration. Okay, both these are correct. The second question is write 2 ways in which water gets polluted. Okay, now we have to write the 2 ways and 2 activities which makes water dirty. हमें वो 2 एक्टिविटीज़ लिखनी है जिसके कारण जो वाटर है वो डर्टी होता है. तो लेट्स स्टार्ट. द आंसर इज
by bathing in water bodies. Water bodies means lake, pond, river. All these are also called water bodies. Okay. अगर हम वाटर रिवर में लेक में अगर नहाएंगे तो दिस एक्टिविटी मेक्स वाटर डर्टी. द सेकेंड इज बाय थ्रोइंग गार्बेज इनटू रिवर्स. और अगर हम गार्बेज को रिवर में फेंक देंगे, दीज टू एक्टिविटीज मेक अवर water bodies dirty. Okay, Bachan, you can write the answer also in this way, that is by bathing and washing in rivers. Okay, अगर हम river में नहाएंगे और अपने clothes को wash करेंगे. The second is by mixing of waste into rivers. और अगर हम rivers में अपना waste जो material है वो mix कर देंगे, जहाँ throw कर देंगे. both these answers are correct. You can write and learn any one of these. Okay, the next question is write one way in which you can save water. Okay, now you have to write a way with the help of which you can save water. हमने यहाँ पे वो एक तरीका लिखना है जिसकी हेल्प से हम वाटर को सेव कर सकते हैं. आंसर इज बाय यूजिंग ए बकेट टू टेक बाथ. अगर हम बाथ लेने के लिए, नहाने के लिए एक बकेट का यूज़ करेंगे तो ऐसा करते हुए हम वाटर को सेव कर सकते हैं. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो राइट योर आंसर इन दिस वे, यूज बकेट टू टेक bath. Okay, both these answers are correct. Again, you can learn any one of these. Okay, students, with this we have completed the back exercise of chapter number 5. I hope this video help you to understand it better. Take care. Thank you.